Sir, now what will you do? कर दी start? Okay, so the chapter is collection and organization of So it data. is like data handling. Very similar to that. Some more things you have to study in this. That is how to find mean, median, and mode, central tendency of a given data. So starting with it will be a bar graph and all that. बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम भी होगा शायद, हिस्टोग्राम भी है, how to make a frequency table, all these things will be there. The mean of tabular data, mean आ गया पहले, the frequency table, then there is mean, then Telemarks. बार ग्राफ नहीं है इसमें, अरे छोटा Sir, नहीं, mean medium mode. yes yes yes, बार ग्राफ नहीं है इसमें, very good, that is a good thing. Forgot how to make telemark. Okay, so first of all you will learn how to make frequency tables. Is it there in the exercises? Questions on making how to making the frequency tables. A die was thrown 20 times and the following outcomes were recorded. Arrange the above data in ascending order and prepare the frequency table. Okay. So first of all, I'm going to explain you what all these, according to question 1 from your exercise 21A. यहाँ पर So we कुछ have to write terms the use करें. definitions. You can write down the definitions from the book if you want afterwards, not during the class. After the class, you can note down. So main things मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि data क्या होता है, that you will be using, the terms which are required. Data क्या है, जैसे for example if I any kind of information if I collect from you, that is known as data. From anywhere, any kind of information if I collect from anywhere, that is known as data. Okay, so for example if I make a chart where I note down the heights of all the students of your class, एक चार्ट पेपर पे मैं सारे स्टूडेंट की हाइट्स रिकॉर्ड कर लूं, नोट कर लूं, so that is I have collected some information from you all, so it prepares a data. Raw data क्या हुआ, data in original form is known as raw data. तो जो मैंने अभी अभी डेटा कलेक्ट कराया आप लोगों से, आपकी हाइट मैंने पूछ करके पेपर पे नोट डाउन करी है, दैट इज रॉ डेटा. रॉ डेटा के अलावा रॉ का अपोजिट क्या हुआ, रॉ मतलब ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा है. अगर मैं उस डेटा को कुछ अरेंज कर देता हूँ किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, In a table. in the form of a table or in ascending order, descending order, anyway if I arrange the data उसके साथ कुछ छेड़खानी करता हूँ, then that the data is not known as raw data. फिर वो raw data नहीं रहता है, फिर वो alter हो चुका है data. Okay, so different names are there for that kind of data. Okay. But the main thing is if you make some changes in the data, that is not the raw data. After making some changes, it does not remain the raw data. Raw data means original data, data in original form. Okay, इसके बाद ऑब्जर्वेशंस क्या चीज होती है, ऑब्जर्वेशन कि किसी पर्टिकुलर बच्चे की क्या हाइट है. फॉर एग्जांपल मैंने हाइट की अभी जो डेटा प्रिपेयर किया था, द होल थिंग इज नोन एज डेटा. जो पूरा सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी है, दैट इज डेटा. किसी पर्टिकुलर बच्चे की हाइट अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से कोई एक बच्चा मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो उसकी फॉर एग्जांपल द हाइट इज 150 सेंटीमीटर्स, 150 सेंटीमीटर. तो वो क्या होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन. कोई एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या हो गई, 150 सेंटीमीटर. So there are a lot of observations in a given data. There could be more than one observations. There could be 5, 10, 40 observations. Any number of observations could be there. So these selecting some or all of few
quantities from the given data. These are known as observations. अभी मैं सब जब टेबल वगैरह की फॉर्म में जब कराऊंगा तो you will understand more. Okay, so these are some important terms which you will be using in the chapter. आगे भी जैसे जैसे आती जाएंगी I will be keep on explaining. There is nothing to worry. It is a very simple thing. And now let us start with question 2. Let's not waste the time in this. Okay, so a data is given here and you have to, they are saying that arrange the data in ascending order first. अभी क्या डेटा, अभी जो डेटा इन्होंने दिया हुआ that is in the raw form. आपको उसको अल्टर करना है. रॉ फॉर्म में गिवन है डेटा आपको, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में दे दिया. अब आपको उसके साथ छेड़खानी करनी है. क्या छेड़खानी करनी है? यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. ओके, एंड देन मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल. So this you have already done in your previous class also, no problem, we will do it again. Question number 2 of exercise 21A. Okay. So first of all I am going to write the data here on the board. सब लिखूं या नहीं लिखूं, ऐसे ही चल जाएगा काम. अच्छा चलो, directly I am writing the data in ascending order. In ascending order. Count the number of times 1 is coming. Can you count, anyone? How many times 2 1 is times. there? Only 2 times. Then 2 is coming how many times? Sir, 5. 5 times. Sir, 5 times. 3 बताओ. Sir, 3 is coming only 1 time. Yes, sir, one time. One 4, time. 4, So 4 times. 4 Sir, times. 4 times. 4. 5, 6 times. Sir, 6 So times. 6 times. Yes, sir, 6 times. 2, 3, 4, 5, 6. Any other number? 6 is also there. How many times 6? So 2 times. Only 2 times. So ये आपने डाई जानते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो का जो वो क्या कहते हैं, क्यूब जो होता है, that is known as Sir, a die. dice. Yes. Yes. So that is thrown and उसमें आपने देखा कि 1 is coming 2 times, 2 is coming 5 times, 3 एक बार आया, 4 came 4 times, 5 came 6 times and 6 came only 2 times. Okay. So now we have arranged the data in ascending order. Now you have to make a frequency table for this. कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी काम है. So here the first column observation. मैं तो बोर्ड पे गंदा सा बना रहा हूँ, आप लोग कॉपी में अच्छा से बनाइएगा. Use a pencil to draw the table. Second column will be tally marks. And final column frequency. Frequency क्या होती है? The number of times a particular observation comes. So these are 6 different observations. कितने observations हैं यहाँ पे? 6 observations हैं अलग अलग. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2. No, sir, 3, sir, there is only 1. 5, 6. So these are 6 different